I didn't realize that today when I was गुड इवनिंग एवरीवन। बिग डे, बिग मैच। कौन जीतेगा आज, आमची मुंबई या साड़ा पंजाब? इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं जयदीप मुखर्जी, अभिजीत देशमुख और वेदा। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। Thanks, thank Lee. you, thank you. Pleasure. बड़ा मैच है। अभिजीत, सबसे पहले आपके पास आती है। मुंबई आपकी फेवरेट है, मुंबई दिल में है, मुंबई जान में बसी है, और आज जान बसी होगी हंसी मुंबई की देखिए, हलक में, क्योंकि हंसी दो देखिए, हंसी देखिए। ये हंसी डबल हो जाएगी अगर लेकिन मुंबई वो अभिषेक 2 पॉइंट आज ले लेते हैं। शायद सीएसके से कुछ सीख ली होगी। आज अगर मुंबई जीतेगी तो मैं डेफिनेटली नाचूंगा। शो पे, ओ, मुझे लगा हमें ट्रीट मिलेगी। शो पे, ट्रीट तो डेफिनेटली देंगे जब हम मिलेंगे तब। I don't mind this show पे dance वाला thing. exactly. I'm looking पोस्ट मैच forward to देखना that. पड़ेगा, Yeah, पोस्ट where मैच do you देखना play the पड़ेगा music? यहाँ। नहीं, अभी आपने बोल दिया मुंबई जीतेगा तो आप डांस करेंगे, शो पे डांस करेंगे। उस पे वेदा और जयदीप ने बोल दिया है। या ये ओके, लॉक पे आगे बढ़ते हैं। I'll definitely try. ट्राई ये लॉक आपको पे भी आगे करना है, बढ़ते ट्राई हैं। मुंबई को भी करना है। बट जयदीप, आई डोंट आपके नो पास कि आती है सबसे पहले मुंबई की। व्यूअर्स कितना एंजॉय करेंगे। नहीं बहुत करेंगे। मुंबई में रह के मुंबई का मैच वो हारते भी हो तभी भी क्रिकेट एंजॉय करते हैं, पूरा साथ देते हैं, फैंस इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। जयदीप, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले मुंबई की बात करते हैं। बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन इतना चल नहीं रही। बॉलिंग वीकनेस है, लेकिन कल एक गुरु मंत्र दिया होगा जो सीएसके में गुरु बैठे हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा 30-40 रन करते हैं तो वो आपकी जो वीक बॉलिंग है वो भी आपकी स्ट्रेंथ बन के आ सकती है। Absolutely. 10 में 60 था जैसे we were discussing last evening, and after that all hell broke loose. You just need a couple of players to get going. As we saw yesterday, there were 2 players for CSK who did all the magic, and Mumbai has enough firepower in that hut. Boy, if they get going, they can do wonders. And we all want this IPL to lighten up. We want it to get going with all a 10-team IPL, and I'm really hoping for Mumbai to win. The only reason is I want everybody to be in the fray. मजा तो तब आएगा। 10 टीम्स का है तो 10 टीम्स रहनी चाहिए एंड तक। वेदा, मुंबई पे ही बात करूंगी कि 2014 में भी मैं देख रही थी स्टार्ट, और 2015 में भी 5 गेम लगातार हारने के बाद कमबैक किया था इस टीम ने, और प्लेऑफ में भी गए थे। लेकिन उस टाइम आपके पास पांड्या ब्रदर्स थे, उसके बाद आपके वो बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट थे, राहुल चहर था। वो कमी जरूर खलेगी, लेकिन क्या वो कमबैक एक्सपेक्ट करेंगे आज? Well, as the franchisee, it is like Mumbai Indians is a very big franchise, and they have won a lot of championship, like be it IPL or Champions Trophy. They're one of the successful teams. But जब team में जब इतनी सारी changes होती है ना, it kind of takes time to understand, what needs to be done. Because the role, everything kind of changes. Like having Hardik or having Krunal in the mix, they kind of had that depth even with bowling and batting, but. This time we're seeing that firepower is missing, and especially losing out on Trent Bolt, that power play bowling. What he used to give that breakthroughs in the beginning. That's something they have missed so far. But we, as fans and as people who know about cricket, we'd expect Mumbai to make a comeback. Though I don't want it to happen because, like I said, I cannot support Mumbai. But still, I'd like to watch a good game of cricket today. और ये हम सब भी देखना चाहते हैं। अभिजीत, मुंबई इंडियंस हैव वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट। पुणे में ये मैच खेला जाएगा। पहला काम तो हो गया, पहला मतलब टॉस आप जीत गए। यहाँ से आपको वो मिला है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसके लिए डांस जो मूव हो सकता है क्या ये टॉस के लिए? नहीं, मैच के लिए ठीक है। आप पॉइंट दे देते हैं कि आप टॉस जीत चुके हैं, यानी कि आप जो चाहते थे, जो प्लानिंग से उतरे थे, वहां पे आपको वो करने को मिल रहा है। लेकिन जब हम बॉलिंग की बात करते हैं तो वो डाउट्स आते हैं, क्योंकि सामने पंजाब किंग्स है जो अभी तक एक ताबड़तोड़ बैटिंग करके आ रहे हैं, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है आज भी वही देखने को मिलेगा। लिविंगस्टोन के पास है, वो अच्छी फॉर्म में है। क्या मंत्र रहने वाला है मुंबई इंडियंस की बॉलिंग के लिए अगर मैं करूँ तो? आई थिंक टॉस आज इतना मतलब इम्पोर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक सो इतना मैटर करना चाहिए, क्योंकि सी मुंबई इंडियंस ने लास्ट 2 मैचेस यहीं पे खेले हैं, तो दे शुड बी अडेप्ट टू द सिचुएशन। एंड कल जैसे हमने देखा था कि सीएसके ने फर्स्ट बैटिंग करके ऑल इट टेक्स इज वन गुड इनिंग फ्रॉम वन प्लेयर। तो
if you score more than 200 runs in any T20 game, I think it will be difficult for any other team to defend it. So same thing. So I think Mumbai, I think they should win definitely, because if you're playing at the same venue for three consecutive games, you're losing three of them. I think then it's really something big problem for you. So uh, I think दो मैच का experience काफी बड़ा होता है. I think Punjab is playing probably their first match at this venue, so it also affect that much. So, and that hunger which was, to be honest, I just saw Surya Kumar as exceptional. He only played two matches for Mumbai, and I think he was exceptional for them. The hunger which should be from the other players, I think वो थोड़ा miss हो रहा है मुंबई की टीम से. तो आज का definitely go with all your, जैसे कल CSK ने किया, same go with same thing, and probably win your first match of the season. बिल्कुल, जब मुंबई बैटिंग के लिए उतरेगी तब इंटेंट अच्छा रखना होगा, लेकिन उससे पहले बॉलिंग में एक प्लान के साथ उतरना होगा। एक बदलाव भी है, आज मिल्स आ चुके हैं वापस रमनदीप की जगह, और जो पंजाब की साइड है वो अनचेंज्ड साइड है। तो मयंक अग्रवाल ने साइड तो चेंज नहीं की, यानी कि पंजाब की जो प्रॉब्लम थी ना, पहले हर मैच में नए प्लेइंग 11 उतरते थे, वो तो पहले सॉर्ट होती हुई नजर आ रही है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, मोमेंटम उनके पास है, बॉलिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग उनकी अच्छी है। किसका पलड़ा भारी होने वाला है? क्या रणनीति से उतरेगी आज पंजाब? जॉयदीप, लगता है कि आज वो 200 का आंकड़ा पार करेंगे? क्योंकि मयंक अग्रवाल रन नहीं करे, लेकिन जो बाकी हैं, बेयरस्टो, लिविंगस्टोन, ये सारे फॉर्म में हैं। Yeah, Mayank is just one inning away, as we saw with Shivam Dubey. He's been in good form. Robin Uttapa was getting 20, 30s, 150, but they went berserk. So today, if Mayank gets off to a start, a good 18 ball 28, and gets on track, then we all know what he can do with the cricket bat in hand. And he's due. That's the best part. He's a fantastic player. He's और due. साथ में शिखर And when धवन भी। players, हाँ, शिखर धवन तो हमारा बैंकर है, वो तो अपना 9 बजे से 5 बजे ऑफिस में रहेगा, उनका तो बात छोड़िए। लेकिन जो कभी कभी इधर उधर चले जाते हैं, उनके बाद बोल रहा हूँ, जिसका फॉर्म, शिखर धवन तो है ही इज लाइक अ पिलर. But what I'm saying is that once this batting order keeps going, see, on paper, on form, Punjab looks stronger. There's no doubt about it. There is no two opinions about that. But just for the sake of the tournament, we're talking Mumbai Indians. We're talking about a team which has won it 5 times. And as Veda rightly said, they've just not won the IPL. They've won every honor, runner-up. They're always there. So for them not to qualify last year in the top 4, not to qualify this year, it's not good for the game. So I just wanted, if at the back end they don't go and qualify, it's fine. But you don't want 2 weeks into the tournament a couple of teams to be out. You want everybody to win the fray, and then business end में देखते हैं who are the last 4 that make it. That मजा तो तभी आएगा. मैं तो बॉलिंग अटैक पे नजर डालूं, अगर मैं मुंबई इंडियंस की, जयदेव उनादकर, जसप्रीत बुमराह, मिल्स उनके पास है। थम्पी थोड़े एक्सपेंसिव थे, लेकिन बीच में एक मैच अच्छा भी गया था उनका। मुर्गन अश्विन, पोलार्ड को थोड़ी गेंदबाजी करनी होगी। देखिए, आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन सामने जो बैटिंग लाइनअप है वो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? क्या प्लानिंग हो सकती है? क्या पावर प्ले में जो बुमराह का जो रोल है वो बहुत ज्यादा अहम होने वाला है? I feel at this point, if you see, there's a lot of pressure on Bumrah because he's the only guy who's taking wickets, he's containing. There is no support from the other bowlers. That has been the main problem for Mumbai Indians bowling attack, and it is looking weak because of that. Like Pollard is someone who's very smart. He's street smart, you can say. Like he comes and he knows what kind of a shot the batter will play. He kind of produces that wicket taking overs. So I'm sure that will be very important. Like we saw, like not having Trent Bolt in the squad, it's like a big blow for them, and everything, the load is on Bumrah. He is performing, no doubt, but he can only bowl 4 overs. You still need 4 bowlers to bowl 16 overs. That is where Mumbai Indians is having a problem. And we're talking about the settling. Like when you're winning, no, everything looks fine. So Mumbai Indians have not been in this situation. Last year they didn't qualify, but they had a good squad. They kind of didn't win. But like right now, there is a lot of gaps, and the puzzles are missing. They need to quickly come up with solution and find proper puzzles to fix their slot, because you can't just keep expecting only 1 or 2 bowlers to bowl well. And we've seen how high scoring it is. Punjab is a powerhouse, so you need to contain them. You can't let them go beyond 180, 190, and then it gets difficult to chase again in the end. You need to make sure that you're not giving more than 160 runs for them to chase it comfortably. Yeah, so on that, Absolutely, I Veda, just like बहुत to अच्छी add that बात the बोली है। wickets,
just to add to Veda, the wickets slowly are beginning to have a little bit of, a role for the finger spinners, for the Pollards who will mix his bowling and stuff. So it's possible that Pollard will be in the mix. So like we do, no Krunal, no Hardik, no Rahul Chair, so no Trent Bolt. That's four guns missing from your team with ball and bat and all rounders. So obviously, but I feel that we saw balls turn yesterday, we saw balls turn the other day. So I think slowly with the wear and tear, we are seeing it, and this will probably increase as the tournament goes by because it's only 3 or 4 venues that we are playing in. So Pollard could have a major role to play slowly as this tournament goes on with his हाँ, bowling क्योंकि वो approach. स्लोअर रन भी काफी फेंकते हैं। और वेदा का एक पॉइंट था मुझे बहुत वैलिड लगा वो आज, क्योंकि हम पार्टनरशिप की बात करें, क्रिकेट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, चाहे वो बैटिंग की हो, लेकिन इस टाइम पे मुंबई इंडियंस को बॉलिंग पार्टनरशिप की जरूरत है, बुमराह का एक साथ की जरूरत है। और आज उनके जो एक बॉलर है ना अभिजीत, राहुल चहर, जो पहले मुंबई इंडियंस से खेल रहे थे, वहां से उन्होंने इंडिया का भी डेब्यू किया था, आज वो पंजाब किंग्स के पास है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैं कहूंगी मिस कर रहे होंगे एरिया। वो होल अभी तक फिल नहीं कर पाए। मुर्गन अश्विन ने बीच में अच्छी बॉल डाली है, लेकिन साथ अभी तक और कोई दिया नहीं है। तो स्पिन अटैक, जैसे कि जयदीप ने कहा कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या मुर्गन अश्विन अकेले नहीं पड़ जाएंगे? You're on mute, Abhijit. म्यूट पे है। Oh, sorry. So I think मुंबई की अगर एक बात करेंगे तो they don't have a good spin attack. मैं पहले से खेल रहा हूँ। And I think हमने अभी पोलार्ड के बारे में बात की, तो my personal view, although being a Mumbai fan, is Pollard is an emotional return player. So I ट्रू। think he's a wonderful guy. He plays well, but I think he's not consistent. What he was like, 8 to 7 years back, he was incredible. But I think in past 2 or 3 seasons, what I've seen is he plays one knock in like 4 or 5 matches, but then he's not a consistent performance. But again, as you mentioned, Rahul Chahar playing for Punjab, so I think वो एक factor होता है. He's not been retained, although he's a wonderful leg spinner, young gun, long term का सोच सकते तो that's people want to be retained. So I think जैसे Rashid Khan भी likely he recently played against Sunrisers Hyderabad. He played very well. So I think वो एक होता है point of view कि मुझे prove करने का that you're not retained. So never expect. I mean, you never know कि that Rahul Chahar can also bowl very well against Mumbai. और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी है अभिजीत कि वो उनके पास 2-3 प्लान है, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस की टीम में रह चुके हैं, तो चैलेंज जो बैटर्स चैलेंज करते हैं उनके अगेंस्ट के बाद 2-3 प्लान है। ये एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है राहुल चहर का, लेकिन सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। If I'm not, I think M Ashwin has also played with Punjab. If I'm not wrong. बिल्कुल उनके साथ थे। That also, so वो भी एक रहेगा point of view. लेकिन वो रेगुलर बॉलर नहीं थे। यहाँ पे राहुल चहर उनके रेगुलर बॉलर थे, उनके मैच विनर थे। स्पिन अटैक को काफी समय से उन्होंने संभाला है। And this works both ways, Abhijit, because it's not that Rahul Chahar knows the batters also know Rahul Chahar because they're playing in the nets day in and day out. So it's both ways. So it's not just it's not loaded in favor of any one person. So there is a comfortable feeling there's a sense of knowing each other quite well, but then, every day is a new day. Every evening is a new evening. उससे भी बड़ा एक रोल रहने वाला है कैप्टन का, वेदा, रोहित शर्मा। तो कैप्टन हम देख चुके हैं, लेकिन आज हम देखने जाएंगे रोहित शर्मा द डिस्ट्रक्टिव बैटर, क्योंकि उनके पास एक बड़ी इनिंग ड्यू भी है। और आज मुंबई इंडियंस का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि वो 2 पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभिजीत जा रहे हैं, तो पहले मैं उनके पास आऊंगी। अभिजीत, कैप्टन रोहित से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई होप आज तो उन्हें खेलना ही चाहिए, बट आई थिंक जो कुछ भी हो, जो कोई अच्छा खेले, आई थिंक मुंबई को आज जीतना ही है, बिकॉज इफ दे लूज ऑन टुडे, आई थिंक प्रॉब्ली इट इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ देयर सीजन दिस ईयर. ये अभिजीत के इमोशंस बोल रहे हैं, इमोशनल अभिजीत बोल रहे हैं। अभिजीत, आमची मुंबई के साथ पूरा मुंबई है, और मुझे लगता है कि आज वो कुछ धमाल करके जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू. वेदा, मैं वापस आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी। रोहित शर्मा द कैप्टन अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, हालांकि सोर्सेस कम है, जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन द बैटर की जरूरत है। सबको अच्छा खेलना होगा, पर रोहित शर्मा ओपनिंग में आते हैं, पावर प्ले का भी यूज कर सकते हैं, और हम जानते हैं जब जब उनका बल्ला चलता है, सामने वाली टीम पहले ही हाफ में बैकफुट में हो जाती है। Rohit actually looks in a great touch. Like he's played like those 30 runs, 40 runs where he's exploded and he's looked really good. It's just that he's not been able to carry it forward. And for the fact that the batting lineup
is what it is like for Mumbai right now. Though Surya's inclusion has given a big boost for them, but Rohit Sharma needs to look at playing a longer innings, because he needs to, I think, switch roles with Ishan. Say that you go all out in the power play, and probably he thinks of playing about 10-12 overs, and then it kind of sets a proper base for Pollard to come and score. Because if you send in Pollard before 10 overs, the whole purpose of his big hitting skill, we've seen that he's struggling for googlies. All the leg spinners straight up, they're coming and bowling googlies to him. So that is kind of a weakness which they have figured out, and they're trying to implement with that plan. But when you have like just 4-5 overs left, I don't think so those plans is going to work, because he's going to look like a different player altogether. So that is something they need to kind of make sure that Rohit kind of plays 10-12 overs, lays a foundation for his finishers to come and play that big role. Because I'm sure, like, not having Hardik in that finisher role will always put a lot of load on Pollard. He needs to do both, hitting from both ends. He's looked decent. Rohit has looked amazing, but it's just that he needs to carry forward and make it big. And maybe today is the day. स्टार्ट को कन्वर्ट करना होगा, हिटमैन शो दिखाना होगा। लेकिन अब थोड़ी सी प्रेडिक्शन पे आते हैं। सबसे पहले की प्लेयर, अगर मैं जयदीप आपके पास आऊं, दोनों टीम से एक एक की प्लेयर पिक करते हैं आज के मैच के लिए। I'm picking Surya again. I'm a huge fan of his. I feel that the sort of form that he is in, sometimes it's not about the best player in the team. I know we all know Rohit Sharma is the best player in that team, but it's about form. As we all know, we've played the game, and form is not at your beck and call. So you have to go with the player who is in form. Now, if Surya is coming to bat early, that means Mumbai is in trouble. So it's a double-edged sword. If Mumbai doesn't bat enough, Surya doesn't get enough of overs to bat and cannot, live to my word, which will be good for somebody else has done the job then. But if Mumbai is in trouble, I'm looking at Surya. But I'll be quite happy if I'm proven wrong and somebody in the top 3 takes the honors. क्या रात में सूर्य उदय होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जयदीप ने पिक किया है सूर्य को। वेदा? Since Mumbai is bowling first, I'd go with Jasprit because his bowling performance will be the key. Whether they're going to chase 180, 190 or they're going to chase 160, 170. So his 4 overs are very like the key for Mumbai's success today. So I'm going to pick Jasprit today. एक ने बैटर, एक ने बॉलर मुंबई की टीम के। Surya also because पहली बार चॉइस सेम हुई है आप दोनों की। Yeah, I wanted to say Surya if you had asked me first. But I just didn't want to talk about the same player. And what else can you speak about Surya? He looks amazing at this point. Absolutely. And also, you could not agree with me. No, I agree with you. Actually, I agree with you. I just wanted to talk about another player. For a change. I will mark today's calendar. पंजाब से वेदा एक प्लेयर पिक करें आज का की प्लेयर, आपको लगता है गेम चेंजर हो सकता है? I actually I love how Livingston is batting. Like he's come to this IPL with a big reputation, big money. He's done really well in the overseas league, but he's delivered this IPL. He was with RR last time. He was not able to show what he's got, but he's kind of got into that fray, and the kind of sixes he hits is huge. They're not like just sixes. They're like 80 meters and above. So I'm looking forward to how Livingston will bat today. I totally agree with it. इस बार जो इन्वेस्ट किया ना पंजाब टीम ने स्पॉट ऑन किया है। जयदीप आपका पिक पंजाब से? I'm going with Shikhar Dhawan. Oh, बैंकर के पास आ रहे हैं आप। He loves banker. It's his favorite word. गरीब का बैंक ही है और कुछ नहीं। Joyda's favorite word. Actually, end of this show, no, if you keep like keywords, no, Joyda's word will be banker. How many times he's used banker in this? 3 times today, but I used twice. No, like from auctions, Joyda. Like okay, that's like my favorite word. I'll go to your college and find out what is another good word tomorrow morning for banker. I said that doesn't want me to say banker. इसने एक काम और दे दिया आपको. That's a girls' college. Just saying. That's okay. I'll just meet them outside and say. विंडो से पढ़ लेना, विंडो में खड़े हो जाना सर, पढ़ लेना, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं बाहर से। ये लड़के करते हैं, हमारे 2-3 वैसे पहुंच गए सुबह, बट वैसे नहीं है। अभी मैच के बाद भी कहाँ जाएंगे, इस पे नजर रहेंगे हमारे यहाँ पे। ओके, जाते जाते एक क्वेश्चन और, किसको पिक करेंगे? मैं पूछूं किससे, क्योंकि जो जाओगे वो उसके अपोजिट बोलेगा। किससे पिक करूं पहले? रेज योर हैंड और अपना जवाब दे दो। My answer is very straightforward. Like I told you, like I've made a statement. Fans can't support Mumbai. So
Though my mind says maybe Mumbai can make a comeback today, I still want to stick to my words and say Punjab. Not much of a choice. Two teams are playing. ये आज तो भी ऐसे ही जाएंगे, ऐसे जाएंगे. Two sides of the same coin, Joyda. And can you imagine Abhijit dancing after Mumbai wins? I'm going to be up all night. I actually I looking also forward want to that. to see the show, यार, dancing show. बट मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं वेदा से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मेरे को लगता है कि पंजाब शायद ले जाए, बट मैं चाहती हूँ कि मुंबई जीते, क्योंकि उससे वो टूर्नामेंट वाइड ओपन हो जाएगा. और सीएसके और मुंबई ऐसी टीम है जिसको आप जल्दी भारत में देखना चाहेंगे नहीं, क्योंकि ये जितना जीतेंगी उतना और रिदम में नजर आएंगी और अच्छी नजर आएंगी. फैंस भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और अब टाइम भी है, मैच भी एंजॉय कर लेते हैं. थोड़ा सा मिलेंगे मैच के बाद. टिल देन एंजॉय द मैच. और फैंस थोड़ा सा एंजॉय कीजिए यार आप भी. बाय बाय, सी यू. Great match. See See you. you. बहुत समय मिलते हैं. Absolutely. It's wonderful Wednesday and Mumbai Indians is up against Punjab Kings. Here at the Pune's MCA Stadium, will Mumbai win their first match of this season? It's not going to be an easy battle, as not all departments of Mumbai are clicking. Only one man, Surya Kumar Yadav, has been exception ever since he played his first match. So you can see here all this wonderful, colorful and Puneri people with this pagdi are here to support Mumbai Indians. And this is special AFK group from Pune. आप बताइए, आज मुंबई जीतेगा? यस 100% जीतेगा. क्या कारण रहा है? अभी तक चारों मैच हार चुके हैं. हाँ, वो हमारा स्टाइल है. 4 मैच पहले हारेंगे, फिर टाइटल ही जीतेंगे डायरेक्ट. मुंबई तो हमारी महाराष्ट्र की एकलौती टीम है. सचिन की भी है, हमारी भी है. तो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हमारा ही नाम है सिर्फ मुंबई इंडियंस. एक नंबर. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. Punjab also is not in good form. Their last match against Gujarat Titans was a nightmare when Rahul Tewatia scored 2 sixes of the last 2 balls. It won't be easy for them, as Mumbai will be desperate to win their first match of the season. Abhijit Deshmukh, MCA Stadium, Pune.